Good morning, my dear students. Students, as you know, we are studying our lesson Reproduction in Animals. Today, we are going to study its last part, Determination of Sex of a Baby. Okay, when do we know the gender of a baby? At what stage do we know if it is male or female child? Who decides the sex of unborn baby? These are the questions which comes into the mind. Okay, now as you know, cells contain thread-like structure inside the nucleus called chromosomes. When we have studied lesson number 7, which was your cells, we have studied the structure of cell. Cell, it contains nucleus, and nucleus has thread-like structure which is known as chromosomes. Now there are 23 pairs of chromosomes. कितने pairs होते हैं? There are 23 pairs, means 46 chromosomes in each cell of the human body. Among these 22 pairs are called autosomes. 22 pairs autosomes होते हैं. They are similar in both males and female. And the last pair is different in male and female and represent the sex chromosome. Now in human body there are 23 pairs of chromosomes, means 46 chromosomes होते हैं. 22 pairs जो होते हैं वो similar होते हैं both male में और female में, but लास्ट पेयर जो एक पेयर होता है वो मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है, विच डिस्टिंक्ट होता है दोनों में, एंड इट रिप्रेजेंट, और उसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम. एंड दिस क्रोमोसोम इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ बेबी, कि वेदर द बेबी विल बी अ मेल बेबी और अ फीमेल बेबी. In males, the sex chromosome contains one X chromosome and one Y chromosome, and it is represented by X and Y. अब जो दो अभी पेयर है तो उस पेयर में एक X क्रोमोसोम होता है, एक Y क्रोमोसोम होता है in males, और in female the sex chromosome consists of two X chromosomes and it is represented by double X. Okay, here you can see female के अंदर ये जो पेयर होता है ये X है, ये भी X है, ठीक है, ये फीमेल का हो गया. एंड वाई मेल क्रोमोसोम में एक एक्स है एंड अनदर इज वाई क्रोमोसोम, तो ये फीमेल का हो गया. द गैमीट्स दैट इज स्पर्म एंड ओवम हैव ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज अदर सेल्स. दैट मीन्स दैट दे हैव 22 ऑटोसोम्स एंड 1 सेक्स क्रोमोसोम. इज इट क्लियर टू यू? तो जो भी फीमेल गैमीट्स होती हैं दे कैरी ओनली एन एक्स क्रोमोसोम, एक्स जो भी है, वाइल मेल गैमीट इट कैरी आइदर एक्स और अ वाई एज अ सेक्स क्रोमोसोम. आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल दैट व्हेन अ स्पर्म फर्टिलाइजेज एन एग, जब भी स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज होता है या फ्यूज करता है तो 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं. इफ़ दी स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम, अगर जैसे अब मैंने आपको बताया कि मेल जो होता है स्पर्म में एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है. अगर एक्स वाला पार्ट एग का, एग में तो वैसे ही ओवम में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल के अंदर. तो एक एक्स उसके स्पर्म के एक्स वाले पार्ट के साथ, एक्स वाले क्रोमोसोम के साथ फ्यूज कर जाए तो इट विल, जो जाइगोट बनेगा इट विल कंटेन एक्स एंड एक्स, दोनों के एक्स एक्स वाले आ गए, तो जाइगोट जो बनेगा दैट विल बी अ फीमेल चाइल्ड. इफ स्पर्म कैरिंग वाई क्रोमोसोम, अगर जो स्पर्म वाई क्रोमोसोम वो फ्यूज करेगा एग के साथ, एग के पास तो ऑब्वियसली हमेशा एक्स होएगा, एक्स क्रोमोसोम, तो एक्स एंड वाई, जाइगोट जो बनेगा दैट विल बी अ मेल चाइल्ड. Now, by this diagram, you can see the role of chromosomes in sex determination. Suppose this is father, this is mother. Father के पास male sex chromosome है X and Y, और mother के पास female sex chromosome है X and X. Now, suppose X वाला chromosome from the male it fuses with X chromosome of male, तो female, तो ये female baby born हो जाएगा. But if Y chromosome of male fuses with the Y
eggs of female, then the male child will develop. Okay. Next we come to viviparous and oviparous organisms. नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो जाइगोट होता है या तो वो फीमेल बॉडी के में ही रहता है या इट इज़ डिपॉजिटेड एज एन एग बाय अ फीमेल. ओके, अब विविपेरस एनिमल्स जो होते हैं, दोज एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, दे आर नोन एज विविपेरस एनिमल. नाउ इफ organism is giving birth to an animal, okay, young one, it is known as viviparous, and generally it is seen in mammals like cows, lion, dogs. They give birth, human being, they give birth to a young one. Next is oviparous animals. The animals that lay eggs that hatch outside the body are called oviparous animals. Means like in fishes, amphibians, reptiles, birds, mostly insects, what happens, and the development of young one, it take place inside the egg और फिर वो hatch कर जाता है, and chances of survival are less than they develop in open environment. Okay, now here you can see a dog gives birth to pups, so it is a viviparous animal, and a hen lays egg, it is an oviparous animal. Now what happens, the young ones which are born, they resemble their parents. Okay, parents से resemble करते हैं, but some animals के अंदर like insects, frog, lizards, इनमें क्या होता है, न्यू जो हैचिंग्स होती हैं, they do not resemble their parents, अपने parents की तरह नहीं लगते. They undergo series of changes after the birth, and this is to resemble an adult, डेवलप होते हैं. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस. नाउ वी विल सी मेटामॉर्फोसिस इन बटरफ्लाइज. ओके, अब आप देखो बटरफ्लाइज के अंदर क्या होता है, 4 मेन स्टेजेस होती हैं उसकी लाइफ साइकिल की. ये दिस यू हैव स्टडीड अर्लियर. एग विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कैटरपिलर और लार्वा, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्यूपा, देन फाइनली इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एडल्ट बटरफ्लाई. बट जो फीमेल बटरफ्लाई होती है वो एग ले करती है, then it undergo under the surface of leaf, then eggs hatches, worms, caterpillar comes out, then they feed on the leaves, then after few days their body becomes shorter and thicker, और बहुत सारे molting की stages से then finally it forms pupa, and finally it is converted into many changes occur inside the cocoon, and finally adult butterfly emerges from the cocoon. तो इसलिए when the egg hatches, it does not resembles butterfly. When the butterfly's egg hatches, it does not resemble butterfly, but it goes series of changes and finally resemble adult butterfly. Now in the same case with metamorphosis in frog, eggs are frogs lay eggs, it hatches, converted into tadpole or larva, then frog with a tail, then adult frog is formed. Now these are again the series of changes which occurs in a frog, from young tadpole, then tadpole with legs, and then frog with a tail, and finally adult frog.